Hello everyone, hope you are fine and happy new year to all of you. My dear students, चलिए आज फिर हम डिस्कस करते हैं कुछ important questions को from the previous years GATE examinations. So myself Dr. Amit Kumar and मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और इन बीच एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ. आप सभी लोग हैं अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं. जस्ट अ मिनट. एंड माई रेफरल कोड इज अमित. इस कोड का यूज करना है आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए. जैसे चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ फॉर्मल चीजों को. द फर्स्ट वन, द अल्टीमेट गेट 45 डे गेट क्रैश कोर्स. जिस क्लास में अभी आप हैं इस क्लास का नाम ही है 45 डे क्रैश कोर्स. मंडे टू फ्राइडे होती है जो, और जिसका टाइमिंग होता है जी 10 AM. ओके, यू कैन सी दैट द टाइमिंग इज 11 AM. और प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी CSIR नेट. क्या है ये अनअकैडमी CSIR नेट? सबसे पहले इसको जान लेते हैं. अनअकैडमी CSIR नेट एक यूट्यूब पर चैनल है. इस चैनल में क्या करते हैं, इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारे हम गेट के क्वेश्चंस लेके आते हैं. उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं. और इस चैनल का क्या एडवांटेज मिलता है आपको कि हमें सारे के सारे लेक्चर्स प्ले लिस्ट में स्टोर कर दिए जाते हैं. इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं एक सीरीज में सारे के सारे लेक्चर्स एक ही जगह पर देख लूं तो आप एक्सेस कर सकते हैं. जैसे कि this is the lecture number 8, so that means you want to access my all previous lecture. Then what you have to do, just you have to go to the playlist of this one and then you can access all this one. Another one is a regular class. Regular class, then what is the meaning and then what is the purpose of this class? That is meant for the CSIR net. So for the CSIR net, Monday to Friday and timing is 5 p.m. The platform is Unacademy CSIR NET channel. So that means what we are doing in this class, we are just going to discuss the concept plus key points plus questions. So three things have the major focus in this class. Okay, so let us start. Okay, यही classes हैं या other classes भी, because the platform of both the classes are on YouTube. So let us see to the another one. Yes, we have. What is that? Special class. When it is a special class every day. Okay, and the timings are, you can see that 8:30 AM and 4:30 PM. But times is always vary. So click on the follow button so that you will get all the notification of my classes. Okay, yeah, that's fine. Now then another one is a plus class, and the platform is the Unacademy and timing is the 10 AM. For plus class is completely structured class. What do you mean by the structure, sir? Structure means we have complete plan of the course as well as we have a complete plan of the book. For example, nowadays we are discussing our real analysis. So all the lectures and what and which date I will take, I have already clear to all of you. Even though you will get the PDF notes of the classes. So these are the important things जो कि हमें जाननी चाहिए प्लस क्लासेस के बारे में. और क्योंकि प्लस क्लासेस को आप ऐसे नहीं देख सकते जैसे कि आप स्पेशल क्लास को देख सकते हैं, फ्री. What do you mean by the free, sir? Free means Unacademy प्लेटफॉर्म पर आपको Unacademy लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है. कहाँ से इंस्टॉल करना है? अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से. और जस्ट अकाउंट बनाने के बाद यू कैन एक्सेस दिस क्लास. बट फॉर दिस ये तो करना ही है, बट यू हैव टू टेक ए सब्सक्रिप्शन. So how to take a subscription? Just I am going to discuss that one. Yeah, how to take the subscription Unacademy learning app. As I have already told you, first you have to install Unacademy learning app from your mobile play store. Then go to the NET exam category. Click on the CSIR UGC button and click on the get subscription button. You will reach to this page at which for the detail is given for the subscription and respective amounts. 1 month what you have to pay, 3 months what you have to pay, 6 months, 12 months and 24 months respectively. But you can see that in the last there is a quite a gift box and have a referral code is written here. So you just write here Amit 10.
Amit is 10, then definitely you will get the 10% off. To get the 10% off, just you need Amit is 10 to write here. That means the amount 11,550 will become, that will become 10,395 rupees. So you will get the 10% off. So you may use this code to get a subscription. And I have already told you the advantage of the plus subscription. If you will take a plus classes, then you can attend all the educators class, and plus you can get the PDF note of the all educators. You can come to the doubt session of the all educators. These are some important fact about the plus classes. So let us come to the next. Yeah, these are the, just I am talking to before that key कौन से educators हैं. You can see there are a lot of the educators, not of this one. There are a lot of educators which are already available here. So आप जिनको देख सकते हैं. So now then come to the next. Come to the question जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी सारा डिस्कशन कर चुके हैं मेरे बारे में, अकेडमी के बारे में, प्लस क्लास के सब्सक्रिप्शन के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन, जिसपे हमने दिया है आपको पहला क्वेश्चन. द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 16 की पावर 2016 इज डिविजिबल बाय 9. कैसे इन क्वेश्चंस को आप डील करते हैं? इन जनरल ऐसा क्वेश्चन गेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, बट समटाइम हमें पता होना चाहिए. कहीं ऐसा ना हो एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, देन हाउ वी विल डू एंड व्हाट वी विल डू. सो फॉर दिस जस्ट थिंक कि व्हाट इज द प्रोसेस. इसका जो मतलब है सिंपली इसने यहाँ आपको कहा है कि भी 16 की पावर 2016 congruent to what that value. He is asking about that value. What is this value? And under mod 9. So the mathematical formulation of this question is that one. He is asking what is this x? What is that? So to get this x, what we have to divide this in 16. The 16 is given to you here. So divide the 16 by the 9. What happened? What you will get? 9 दूनी 18. 9 के 9 वन टाइम चलाएंगे तो आपके पास बहुत बड़ा लार्ज नंबर बच जाएगा, तो बेटर है कि 2 टाइम्स चलाओ आप. अगर मैंने 2 बार चलाया तो what happened? This is 18 and minus 10. What exactly you are getting? I am getting a minus 2. Okay, so that means this is nothing, that is a minus 2 to the power 20116 congruent to what? X mod 9. Still हमें नहीं मालूम कि वो क्या वैल्यू है, बट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस वन. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो 16 है 20116, दिस इज अ यूएन नंबर, सो दिस इज नथिंग, देयर इज सिंपली a 2 to the power 2016 congruent to simply x mod 9. राइट, स्टिल ये मेंटेन रहा. आप कैसे डिवाइड करें? आप इस नंबर को देखिए, आप कैसे, आपका पर्पस होता है जो रिमाइंडर बचे वो या 1 बच जाए, -1 बच जाए, नियर टू 1 बच जाए, बस ये पर्पस होता है, या पूरा डिवाइड हो जाए, यही तरीका है. तो सर यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? अब आप नोटिस कीजिए, हमें दिया हुआ है 2 की पावर 2016, राइट, दैट इज गिवन टू x. अब मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, और अगर मैं 8 को डिवाइड करूं 9 से, सो दैट मीन्स आई विल गेट द -1, राइट, आई विल गेट द -1. सो चलिए, तो इसको सबसे पहले 8 बनाने की कोशिश करते हैं. इसके लिए मुझे क्या करना होगा? जस्ट आई हैव टू टेक 2 की पावर 3, और 3 तो आपने इस हिस्से में से लिया है, तो कैसे करेंगे इसको? दैट मीन्स 2016 को आप 3 से डिवाइड कीजिए. डिवाइड कर सकते हैं, तो देखते हैं कितना आता है हमारे पास. हमने कहा कि 3 6 18, राइट. कितना बच गया जी? 2. ओके, एक और आ गया हमारे पास, सो दैट मीन 3 7 21, ये भी कैंसिल हो गया जी, 6 बच गया, और 3 दूनी 6. सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी आउट. और कितना बचा? 2016 की जगह 6321 बच गया, यानी कि 637 और 2. So that means simply you can write this is equal to 2 की power 3, this means 8 to the power 672 congruent to x mod 9. That's a number you are required to find out. So 8 to the power 672 congruent to x mod 9. So now you divide this number. So what happened? This will become -1 की power 672 congruent x
mod 9. So notice here that what is this value? The value is simply because this is the even number, so that means the power will become this. This is a 1. So this is what? Simply 1. Another mod 9. So this implies that 16 की power 2016 congruent to 1 mod 9. Hope it is clear to all of you. So my dear student, the correct answer is 1, which is given here. So now come to the next question. What is the next? Okay, so नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू ऐसा क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है जी आप लोगों से इस तरीके का ऐसे सिंगल प्रॉपर्टी रखने वाला क्या दिया हुआ है हमें कहा गया कि लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर such that f at 0 is equal to 0 and derivative of f is less or equal to 5 for all x. Then we conclude that f1 is what? f1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? सो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के दो तरीके होते हैं आप बाय डिफिनेशन चलिएगा भाई अगर किसी फंक्शन का डिफिनेशन करना हो मुझे देन व्हाट आई हैव टू डू जस्ट आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव यहाँ से कहा है ना आपके पास कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है दैट मींस डेरिवेटिव बाउंडेड है so we know already a function is differentiable at a point a function is differentiable at a point A है ना means f dash a is equal to a function is differentiable at a point A if fx minus fa upon x minus a and limit x tends to a exist. That is the thing and is equal to some value this is known as a f dash a ऐसा हम कहते हैं तो ठीक है so because at the point 0 the value is given to you take a is equal to 0 let a is equal to 0 then what happened the value will become f dash at 0 is equal to what happened this is what this value is fx minus f0 fx is minus f0 upon x and the limit x is tending to 0 okay now so you see that what is the value of f0 f of 0 is equal to 0 so simply that is nothing that is equal to a limit x is tending to 0 f of x upon x this value as you are taking the derivative arbitrarily so replace a by 0 by the x this is the arbitrary point so that means f dash x is equal to simply fx by x now take its modulus okay so now then what is this value since given है आपको ये बात तो what f dash x modulus less or equal to 5 it is given to you so means that this value is less or equal to 5 this implies what happened fx upon x modulus less or equal to 5 this implies that fx modulus less or equal to f mod x right this is simply this value take what value you are required simply you are required f of 1 so what you can say this is nothing fx less or equal to 5x and greater than equal to minus 5x due to the modulus property of this x right now so this one so f of 1 is equal to what f of 1 less or equal to 5 and greater than equal to minus 5 so clearly this implies that f1 lie between close interval minus 5 to 5 दिस इज आंसर एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन सो एक तो ये तरीका था ठीक है जब मैं f of 0 को वैल्यू को लूं दूसरा भी तरीका होता है व्हाट इज दैट वन
तो सेकंड वे में आपको देखो, सेकंड वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिख लें इसको एफ डैश एक्स का मॉड्यूलस लेस और इक्वल टू 5, राइट। यहाँ दो फंक्शन है क्या, एक तो मॉड्यूलस फंक्शन है और एक डेरिवेटिव वाला फंक्शन है। इसकी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज आप लगा लीजिए यहाँ पर। देन व्हाट हैपन, मॉड्यूलस फंक्शन की अगर हम प्रॉपर्टी लगाने चलते हैं, सो दिस विल बिकम सिंपली एफ dash x less or equal to 5 and greater than equal to -5. Now take integrate कर दीजिए, what happen, this will become fx less or equal to 5x and greater than equal to a -5x। ये इंटीग्रेट भी कर लिया। सो देखा जाए, अब मैं यहाँ वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ f of 1 is what less or equal to 5 and greater than equal to -5, और ये छोटा भी था और इजी भी था, एकदम से कर लिया हमने, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। लेकिन ये जनरली गलती हो जाती है कब, जब आपके पास फंक्शन ये आ जाए तो इसमें जरूर कंडीशंस को सेटिस्फाई करके देखो। f of 0 पे क्या वैल्यू है, द वैल्यू इज 0, सो दैट मींस दिस विल वर्क। बट इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, देन f of आपके पास 1 पे मैं कहूँ कि 1 आ जाएगा, नहीं आने वाला है बेटा। दैट्स अ रीजन कि आप तब यूज नहीं करोगे। ये 0 है, दैट मींस यू कैन यूज इट, बट इन अदर केसेस दिस इज डिफिकल्ट, बिकॉज इसके थ्रू चलोगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू 1 होती तो दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, आप लिखते कि fx माइनस 1 है जी, ठीक है ना। तो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट दिस। होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, या द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सेट इज, क्या इसका सुप्रीमम होगा और क्या इसका इन्फीमम होगा, ऐसा हमें फाइंड करने के लिए कहा है। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो और उसमें हमें दिखाई दे कि -1 की पावर n ऐसा कोई टर्म है, सो पूरे, चाहे वो सेट हो, चाहे वो सीक्वेंस हो, या चाहे वो सीरीज हो, पूरी की पूरी नेचर डिपेंड कर जाती है ये आने की वजह से, -1 की पावर दिस आने की वजह से n की वैल्यू पर n इवन है या ऑड है। सो नोटिस हियर दैट व्हाट हैपन, s is given to us, s is equal to simply 1 plus -1 की power n by n, that is your n, such that n belongs in the set of a natural number, right, that is your n। now take it, what happened, s is equal to क्या सिचुएशन है, 1 minus 1 by n, if n is odd 1 plus 1 by n, if n is even, if n is even। यही तो दो बातें हुई ना। तो सर आप सेट में ऐसे क्यों ब्रेक कर रहे हो, नो नो बेटा, ये अभी भी स्टिल दिस इज द सेट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। जस्ट मैंने ब्रेक करके रख लिया कि आप अपने उन टर्म्स को देखने लगो। सुप्रीमम का रफ मीनिंग ये ध्यान रखिएगा भाई, सुप्रीमम निकालना है, यानी कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि सारे नंबर्स छोटे हों, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन द सेट एस, ऐसी नेचर, तो ये m जो है उसका सुप्रीमम कहलाता है। क्यों, ये सबसे बड़ा हुआ। और सिमिलरली कहूँ कि इफ देयर एग्जिस्ट सम स्मॉल m, कि सब उससे बड़े हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस, तो हम क्या कहते हैं कि ये सबसे छोटा है, दिस इज कॉल्ड द इन्फीमम, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग कि सुप्रीमम जो हमारे पास यूनिक हो जाते हैं, यानी कि s is equal to 1 minus 1 by n and 1 plus 1 by n if n is even। so just think that what happened, एलिमेंट्स को पुट कीजिए, n को तो हमें ऑलरेडी बता दिया है, n belongs in the set of a natural number, n of set of natural numbers में है। so let us see that फर्स्ट एलिमेंट जैसे ही मैंने ऑड रखा, यानी कि 1 आई विल पुट 1 minus 1, दिस इज इक्वल टू 0, अनदर वन इज 1 minus 1 by 3, अनदर वन इज 1 minus 1 by 5 एंड सो ऑन। ओके, नीचे की तरफ सेट में क्या वैल्यू आ गई, सबसे पहले शुरू करेंगे n is equal to 2 से, यानी कि फर्स्ट वैल्यू विल बी द 1 plus 1 by 2, the next will be 1 plus 1 by 4, and then next will be the 1 plus 1 by 6 and so on. These are the values here. So now then what happened, the first value is a 0, now then what is this value, 2, that is a 2 by 3, and next is a 4 by 5, naturally next will be the 6 by 7 and so on. And from this place, what is the first value, this is a 3 by 2,
And then what is this? This is a 4 and a 5 by 2, 5 by 4. And then next is a 7 by 6, and so on. Now you can just judge and can see that कि एलिमेंटो में क्या रिलेशन है. So अब आप यहाँ से ही देखो, यहाँ जो मुझे सेट मिला, the set is this one having such type of the element and no element is in the negative form. So definitely the answer will not be the -1 and +1, यानी कि the option A and B are completely wrong. You can just cancel them. नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं होने वाला है जी, बिल्कुल आप खत्म कर दीजिए उसको. ओके सर. नाउ देन कम टू द नेक्स्ट. सबसे छोटा एलिमेंट हमें क्या दिखाई दे रहा है सर? जीरो से सब बड़े हैं, जीरो तो छोटा है, तो यानी कि डेफिनेटली सी और डी में से ऑप्शन है हमारे पास, सबसे छोटा मिल गया ना. इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट हो गया, इससे बाहर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. सुप्रीम मिनिमम यूनिक होते हैं और सेट के मेंबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए जी, सुप्रीम मिनिमम की डेफिनेशन को हम जब डील कर रहे हैं. सो नाउ देन व्हाट हैपन. ये भी हो गया जी. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि 1/2 हमें कहीं दिखाई दे रहा है, 1/2 नहीं है, तो क्या आंसर, बट 3/2 में दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट वन, नॉट द B1. बट सर आपको कैसे पता लगा कि यही है कॉम्प्लिकेटेड? बेटा मुझे तो रिलेशन मालूम है कि कौन सा मेरे से बड़ा है, ये इससे बड़ा है या नहीं है. नाउ देन दैट इज ए बिगेस्ट वन. आई नो दिस इनइक्वालिटी इज गोइंग टू बी होल्ड. और यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सी इनइक्वालिटी होल हो रही है, दिस वन एंड दिस वन. सो दिस इज द थिंग कि मैं देख रहा हूँ कि जब मैं पॉजिटिव वाला सेट लेके चला था तो एलिमेंटों में क्या नेचर है, कैसे वो घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं. और जब मेरे पास, जब मैं सॉरी इवन वाला लेके चला था और या ऑड वाला सेट लेके चला था, तो मेरे पास कैसी नेचर आई है. दैट वाज माय पर्पस टू सर्च हियर. अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो सिंपली मैं उसको बता पाता हूँ कि भाई ठीक है, सुप्रीम कौन सा इसमें और इन्फीरियम कौन सा. ठीक है ना, यहाँ सबसे पहले ही पता लग गया था मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट यही है, राइट. और यहाँ पर भी मुझे पता लगे सबसे छोटे एलिमेंट यही है. यहाँ पर बढ़ते 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 कहाँ पर जा रही है ये, एंड टेंस टू इनफिनिट, दैट इज रीचिंग. जब मैं इनफिनिट की तरफ मूव कर जाऊंगा ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, दिस विल रीच टू द 1. और जब मैं इसमें भी पहुंच जाऊंगा एंड टेंस टू इनफिनिट, व्हेन वेयर आई विल रीच टू द 1, यानी कि एनी हाउ इन बोथ द केसेस आई विल रीच टू द 1 ओनली. और 3/2 तो 1 से बड़ा होता है. ओके ना, दैट्स अ थिंग. होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है. यस, कंसीडर द स्टेटमेंट. कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको. क्या पहला स्टेटमेंट है Z6 इज अ ग्रुप ऑफ Z12. पहले देखो Z12 है क्या, और उसमें से पूछा है करेक्ट इनकरेक्ट की बात. अब Z12 को अगर मैं आपसे कहूँ, Z12 इज व्हाट, Z12 इज ए साइक्लिक ग्रुप. तो साइक्लिक ग्रुप अगर मेरे पास है तो देन मुझे मेरे माइंड में क्या होनी चाहिए बात, साइक्लिक ग्रुप है यानी कि हर डिवाइजर्स के लिए इसके पास एक सब ग्रुप होता है और जो भी सब ग्रुप होगा वो सब साइक्लिक होंगे. यानी कि साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप भी साइक्लिक ही होते हैं. और सब ग्रुप ऑब्टेन करने के लिए मुझे लैग्रेंज यानी कि लैग्रेंज थ्योरम का यूज करना होता है. यानी कि सबसे पहले उसके ऑर्डर को मैं डिवाइसेस देखता हूँ कौन कौन से डिवाइड करते हैं. सो दैट मीन्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस वन, द ऑर्डर इज अ 12. अब इसको देखता हूँ कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं. इसको 1 भी डिवाइड करता है यानी कि 1 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप भी इसके पास है. 2 भी इसको डिवाइड करता है यानी कि 2 ऑर्डर का भी साइक्लिक सब ग्रुप इसके पास है. 3 भी इसको डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी करता है और ये इटसेल्फ भी करता है. यानी कि इन सब ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप इसके पास पड़े हुए हैं. बिकॉज दिस इज नथिंग, देयर इज किसके आइसोमॉर्फिक है, ये Z6 की Z12 के आइसोमॉर्फिक है. ओके, तो साइक्लिक ग्रुप मेरे पास है Zn. तो उसमें मैं सिर्फ डिवाइसेस देखने होते हैं बेटा, उसका मिल जाएगा. तो 6 का है ना इसमें, 6 का यस है, तो इसका मतलब फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज अ ट्रू. Consider the statement. This is a true statement. Z6 has subgroup of Z12. No problem. Now then Z5 is isomorphic to a subgroup of Z15. Again the same things and same reason. Z15 is what? Z15 is a cyclic group. कैसा है जी, एक साइक्लिक ग्रुप है. सो अगर मेरे पास साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है मुझे ऑलरेडी, तो मुझे सिर्फ इसको डिवाइजर देखने होंगे क्या क्या इसके डिवाइजर्स हैं. जस्ट आई एम गोइंग टू डिवाइड 15. इसका डिवाइजर कितना है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है. दीज आर द डिवाइडर्स. 3 5 15 राइट ना. सो 2 2 4 4 टोटल 4 होंगे राइट. हाँ,
4 ही है हमारे पास, ठीक है ना। सो दैट मीन्स क्या, इसमें जिसकी हम बात कर रहे हैं Z5 इज आइसोमोर्फिक टू सब ग्रुप। यस, इसके सब ग्रुप कौन कौन से हैं? इसका सब ग्रुप आपके पास वन वाला ट्रिवेली आ गया है एक तो, राइट, Z3 भी आ गया है जी, Z5 भी आ गया है एंड Z15 भी आ गया। ये सारे के सारे सब ग्रुप हैं इसके। दीज आर द सब ग्रुप्स ऑफ दिस वन। नाउ देन इसने क्या है, Z5 is isomorphic to है ना isomorphic definitely what, even though simply Z5 ही यहाँ भी और यहाँ भी, ये हो गया ना isomorphic subgroup, these are the subgroup। So this का मतलब क्या हुआ जी, this statement is also the true, so both are the correct statement, C is the correct option। hope it will be clear to all of you। ठीक है, ये बहुत trivial questions है, ऐसा questions तो बल्ले बल्ले कर देता है एकदम से, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जस्ट एंड थिंक, इसको हम कई तरीके से देख सकते हैं। वन थिंग कि हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो कैसा आ रहा है इंटरसेक्शन में, और ग्राफिकली भी क्या हम इसे देख सकते हैं। इन जनरल तो हमें ग्राफिकल देखने में फायदा है। अब आप नोटिस कीजिए आई एन क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले हमें बात की है ऑप्शन ए में आई एन की, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एन इज इक्वल टू दिस इंटरवल। सो लेट अस टेक दिस आउटसाइड। in is equal to, given to you, in is equal to 0 comma 1 by n, ठीक है ना। obvious है, and belongs in the set of a natural number। So now then take this one on the real line. This point is a 0 and that point is a 1, and this is the real line, right? It's a real line here. Now what exactly I am doing, this is open from this side, that means this point is not included in the set। This is open and that is also the open। क्यों open? When you take n tending to infinite, what you are getting is 0, okay, no, but what is that first element? N is equal to 1, because n belongs in the set of natural number, and you will take the interval. So what will be the I1? I1 will be the simply 0 comma 1, so this is the interval at this place। Now what is the I2? I2 will be equal to 0 comma 1 by 2, and I3 is equal to similarly 0 comma 1 by 3, I4 is equal to 0 comma 1 by 4, I5 is equal to 0 comma 1 by 6, and so on। These are the things, ठीक है sir। So 0 to 1 is the interval, and the next is a 0 to 1 by 2, so that means the next interval is a 0 to 1 by 2, we can this is a value 1 by 2। Now then another is a 1 by 3, next is a 1 by 4, next is a 1 by 6, and so on this is going to be, and tending to infinite, what is this value? As you are moving, if I will say and tending to infinite, you are getting 0 comma 0, ओवर डबल 0 comma 0। सो दैट मीन्स द पॉइंट जो कि आपके पास कैसा है, इसने कहा कि नॉन एम्प्टी, वो पॉइंट तो इसमें है ही नहीं जिस पॉइंट पे आप इंटरसेक्शन पे पहुंचेंगे। सो दैट मीन्स व्हाट दैट आई एंड दिस इज नॉट द योर आंसर। इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए नॉन एम्प्टी, द सेट इज ए एम्प्टी। okay, so that means intersection of this is equal to give you a 5। सो अब क्या करें सर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो जस्ट आई हैव टू क्लियर द पेज। या नाउ देन ये क्लियर हो चुका है हमें। सो दिस इज नॉट द आंसर, हमें मालूम हो गया। नाउ देन कम टू द जेएन। जेएन तो हमें आंसर देने के लिए मूड में लग रहा है कि यही आंसर ना हो जाए, इसका नेचर ही बता रहा है 0, 1 बाई एन। ओके, बट यहाँ पर आप नोटिस कीजिए सारे इंटरसेक्शन ही है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले रहे हैं। So see here, what is the Jn? J1 is what? J1 is equal to 0, 1. That means on a real line, what happened? This time we have a 0 as well as we have the 1 both. So both values are here. Now then, so now I am going to find out the J2. This value is equal to 0 and 1 by 2. Now then, J3 that is equal to 0, 1 by 3, and if I will continue this process and so on as n tending to infinite, I am getting a Jain infinite which is equal to 0, what, a 0, and is equal to a singleton 0. So
That's fine. That means, and the next interval will be this one, this close interval. Next will be the close interval, and so on. Finally, you will reach to this page. So that means its intersection have the element 1, which is a 0. So this is not empty, non-empty. This is not the empty. So this is a non-empty set. So what happened? This is the correct option over there. So Jain तो हमें मिल गया है जी. So come to the next option. What the next option says to us? चलिए जी, कैच कर लेते हैं हम क्लियर. Now, what is given to us? The next is given to a kn. What is the value of a kn? So that means this is not the answer. This is we got the answer. So we are moving now to the side kn. What is the value of kn? Kn is equal to a open interval n to infinite. Is it okay? Yeah. So take the values k1 because you know n belongs in the set of a natural number. So k1 is equal to what? 1 to infinite. K2 is what? That is also 2 to infinite. K3 is what? That is 3 to infinite. And if I will continue, what I will get? I will get the infinite to infinite. By the same logic and the same thing, see here on a real line, take this value as a 0. Now then, what happened? The first is interval is a 1 to infinite. It's moving. So I cannot say this is a one place. Okay. So next is what? The next is a 2 to infinite. Next is what? 3 to infinite. And then next and this one. So this is a value is a 1, that is a 2, that is 3, and that is a 4, and so on. It is going to be continuing this way. Exactly at the end position, you will get what? That is equal to nothing. You will get infinite. So that means in the intersection of this one, you will get a 5. कुछ भी नहीं है. आपको चाहिए था क्या? Non-empty. You are getting an empty set. So this is not the answer. Okay, so come to the next. What happened? Okay, now this is a close from the one side. So means I'm going to clear it. So take it this what L of n is equal to simply a closed interval n comma infinite. Take L1. What is this value? 1 comma infinite. L2 is equal to what? 2 comma infinite dot 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 dot. हमने ये values को ले लिया. So if I will speak about the L infinite, so this is the value which will give you the infinite. The closed interval will be converted into the open interval when you will put n tending to infinite. Due to that reason, this infinite is a quantity. We don't know what is that value, but it is fixed. It's a value. So that's what n is tending to 0. N is tending to infinite. Okay, this is not equal to infinite. This implies that जैसे जैसे आपका n की तरफ infinite बढ़ रहा है, so ये equal तो नहीं हुआ ना, नहीं equal हुआ तो उसका मतलब you are getting the open interval this side. Okay, so what happened in the similar manner जैसा कि आपका पहला था, this will be equal to the 5, this will be equal to 5, this will equal to the singleton 0, not equal to 5, and this is equal to a 5. So this is not the answer, this is the answer, this is not, this is not. Hope it will be clear to all of you. चलिए फिर मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ओह, वी डोंट हैव एनी नेक्स्ट क्वेश्चंस टुडे. सो आप लोग स्पेशल क्लासेस के लिए भी ध्यान रखिए थोड़ा सा. अनअकैडमी पर आप अपना अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से और क्लासेस को रेगुलर रहिए बेटा. नाउ देन आप हैं अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को. थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास. ओके देन.